Hello, good morning students. I am Dr. S.A. This is my mobile number 9431269741. You may ask me any question after calling on this mobile number. Today we will discuss about reflex action in the chapter Control and Coordination. That is termed as reflex action. What is reflex action? Sometimes we do some activities without knowing about this. It is not in our under control. We do something without knowing about this. You may call it, this type of action is reflex action. It is a type of involuntary action. Reflex is a word we use very commonly when we talk about sudden actions, some sudden actions, in response to something in the environment. We say, for example, I jumped out of the way of the bus reflexly. बस आ रही थी, मैं रास्ते में था, अचानक हट गया, मैं बच गया. और I pulled my hand from the flame reflexly. और I was so hungry that my mouth started watering reflexly. So hungry that my mouth watered reflexly. वाटर माने मुंह में पानी आ जाना, सलीवा निकल जाना. जब भी हम लोग किसी को अच्छी चीज खाते हुए देखते हैं या अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं कि यार घर में ये पका है, घर जाएंगे तो ये खाएंगे, किसी चीज को पकते हुए देखते हैं तो उसके फ्लेवर से हमारे नर्वस सिस्टम में वो एक्शन जाता है, वो मैसेज जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में सलीवा निकल जाता है, पानी आ जाता है. What exactly do we mean by reflex action? A common idea in all such examples is that we do something, हम कुछ ऐसा भी करते हैं without thinking about it. We do something without thinking about it, यानी unknowingly हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, मुझे पता चलता है बाद में, पहले फंक्शन हो जाता है. And this type of function is termed as reflex action, without feeling in control of our reactions. In previous class, we have discussed that in environment changes takes place, and according to the changes that took place in environment, we react. Yes, there are some situations where we are responding with some action to change in our environment. How is control and coordination is achieved in such situations? Now, let us consider this further. Take one example. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation. अर्जेंट इसलिए कि तुरंत हाथ हटाना है, डेंजरस इसलिए कि अगर तुरंत हाथ नहीं हटाएंगे हाथ जल जाएगा. Before we go further, we will see here something. Information from any part of the body comes through the nerves to a spinal cord. And through a spinal cord, this information reaches to the brain. This is the normal situation. Suppose I am standing here and in my left leg there is a mosquito biting. मेरे बाएं पैर में एक मच्छर काट रहा है.
This information travels through nerves in the form of impulses and it comes to a spinal cord. What is a spinal cord? We will see later, but just now we can see that a spinal cord is a bunch of nerve fibers. तार का गुच्छा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का तार का गुच्छा, सीसीटीवी कैमरे के तार का गुच्छा, उसी तरह से bunch of nerve fibers है spinal cord, which is packed inside vertebral column, and this spinal cord is connected to the posterior portion of the brain. Through this spinal cord, the information in the form of impulse reach to the brain, and in brain processing takes place. कि मच्छर काट रहा है, कि कोई बच्चा नेडल चुभा रहा है, processing takes place. After processing, again a message is created, which comes to our, suppose, left hand. We just pull our legs slowly and kill the mosquito. मच्छर मार लेते हैं. Touching a hot flame is an urgent and dangerous situation. और in fact for any animal, जानवरों में भी ऐसा होता है. Because in animals there is no proper thinking system, not well developed thinking system, not well developed. One seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burned. मान लो ये hot rod है, मैं टच कर रहा हूँ, information via nerves in the form of impulses स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गया, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुआ कि बाबू तुम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, अगर तुम इस पर से हाथ नहीं हटाओगे तो तुम्हारा हाथ जल के कोयला या राख बन जाएगा, कोल, चारकोल बन जाएगा या ऐश बन जाएगा. तो वैसी हालत में एक मैसेज आएगा और फिर आफ्टर थिंकिंग ये यहाँ से अगर हटाते हैं, it will take too much time. This depends upon how we think. कोई जल्दी सोच लेगा, कोई देर से सोचेगा और तब तक समय पूरा हो जाएगा, हाथ हटाने के पहले हाथ जल के कोयला बन जाएगा, फिंगर कोयला में डेवलप कर दे, कन्वर्ट कर जाएगी. If nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier just now, कि स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा, फिर मसल्स तक आएगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर बॉडी मूव करेगा. Then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex process, बहुत जटिल प्रक्रिया है. So it is bound to involve a complicated, intricately arranged neurons in our body. Very complicated system, nervous system. If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. Neurons means nerve cells. We have talked about earlier. It sits in the forward end of the skull. Skull में brain है, वो क्या है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है, नर्व सेल्स का बना हुआ है. स्कल खोपड़ी को कहते हैं. And receives signals from all over the body. पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है. तुम लोग एग्जामिनेशन देते हो, पीछे वाला बच्चा अपने आगे बैठे हुए बच्चे को पेंसिल से प्रिक करता है, तो हमको क्वेश्चन का आंसर बताओ. तो जैसे ही कोई बच्चा प्रिक करता है, उसको एहसास होता है कि हमको somebody is pricking. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. और उसके बाद से रिस्पॉन्स करने के पहले थिंक करता है. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerves coming from various parts of the body. पूरे बॉडी से नर्व्स फाइनली कहाँ पहुँचती है? ब्रेन में. कैसे पहुँचती है? जनरल केस में क्या है? जनरल केस में क्या है? थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पहुँचेगा. तो नर्व्स. Similarly,
If this part of the brain is to instruct muscles, brain का जो portion कहाँ तक हुआ? If this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to the different parts of the body. ब्रेन से फिर नर्व्स को, इम्पल्स को, मैसेज को बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में लाना पड़ेगा. इफ ऑल ऑफ दिस टू बी डन, अगर ये सब होना है कि ये इम्पल्स वाया स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में जाए, प्रोसेसिंग हो, फिर वहाँ इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो, फिर वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में आए, व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, उस सिचुएशन में इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू बी गेट बर्न. पूरा टाइम लग जाएगा कि हम जल जाएंगे. वैसे सिचुएशन में क्या होता है? इन दैट सिचुएशन information reaches to a spinal cord. No processing takes place in brain, and through a spinal cord, the information reaches directly to the muscles. Directly to the muscles. Directly to the muscles, and in this way, muscles contracted, and the function is performed. The information also goes to the brain. Such type of transmission of impulse from receptor through a spinal cord to effector without directly going to brain, without processing, this type of transmission of impulse is termed as reflex action. Now see. Receptors. A spinal cord. Effector. This is the path of the impulse during a sudden activity, that is during reflex action. The path travelled by an impulse during reflex action is termed as reflex arc. The path means rasta, travelled by an impulse during reflex action is termed as reflex arc. Although this message also goes to brain. ये मैसेज ब्रेन में जाता है ताकि हमको बाद में याद रहे कि मुझे यहाँ जल गया था. अगर ये नहीं जाता तो मुझे याद भी नहीं रहता ये कैसे जला. How does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, अगर कोई नर्व्स डायरेक्ट मसल से अटैच्ड है टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ मसल्स, तो उस टाइम में रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान डायरेक्ट काम हो जाता है, प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन में नहीं जाता है. नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिमेंबर इट. नो रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कोई योगदान नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान. If the nerves that detect were to be connected to nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. वैसी हालत में input और output action बहुत quickly complete हो जाएगा. This is input and this is output. But without processing, no processing. In computer, we have learned that input, processing, and then output. Here, no processing. And the processing center is actually our brain. But here, in the case of reflex action, there is no processing. Such a connection is commonly called a reflex arc. Here, should such reflex arc connection be made between input nerves and an output nerve, the best place will be of course spinal cord. जहाँ input
और आउटपुट दोनों आपस में मिलते हैं। Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord in the way to the brain. Reflex arcs are formed in the spinal cord. Reflex arc कहाँ बनता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। Although the information input also goes to reach the brain, हालांकि ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाता है ताकि हमको याद रहे कि हम थोड़ी देर पहले जल रहे थे। Of course, reflex arcs have evolved in animals. ये एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। Because the thinking process of brain is not fast enough. ह्यूमन के तरह फास्ट थिंकिंग प्रोसेस नहीं। In fact, in many animals, they have very little thinking or complex neuron networks. बहुत कम उनमें complex neuron networks पाए जाते हैं। So it is quite likely, इसलिए मानी बात है, that reflex arcs have evolved in efficient ways of functioning in the absence of true thought process. हम लोग में ट्रू थॉट प्रोसेस, हम थिंक करते हैं, थिंक थॉट प्रोसेस है। सभी एनिमल्स में ये थॉट प्रोसेस नहीं होता है। However, even after complex neuron networks we have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient in quick responses और harmful और dangerous situation में reflex arc ही हमको बचाता है। थैंक यू।